Dear viewers, welcome to my class. As we all know that due to COVID-19, our lives have suffered to a greater extent. Every sector, though it be economical or social, they have been affected enormously. But the most affected sector, which I think is none other than education sector. So keeping this alarming situation into my considerations, I thought let's do something good for society, for my students, in particular, and for general viewers in general. So today we are going to learn the basic introduction about English language. So my dear viewers, what comes in your minds when you hear the word language? What comes into your minds when you hear or when you read this word language? So we can say, and we know this very profoundly, that language is a distinctive feature of human beings that distinguish us from other species. And what do you think? What is the purpose? What is the function of language? What do you think? What comes into our minds? What do you think that what is the purpose of language? So the simple answer is we use language just for communication. And the main purpose, the basic function of any language of the world is communication. Hence, this is the most dynamic, most versatile, most impactful feature of human beings: communication, language. And I believe that every language of the world, every language, any language in this whole world is beautiful. I cannot say, or I do not believe that this language is better than that language is better than this language. Rather, I believe, and I'm a staunch believer, that every language has its beautiful colors. So, as far as English language is concerned, especially my lectures will be addressing to my students, all those students who learn English language as their second foreign language or third foreign language, from 8th standard to 12th standard, or those students who are reading in colleges or in universities. The lectures will be focused on the grammar of language, because generally we know and we have come to know about the fact that most of the students lack grammatical competence. Either they are in the class or they are in the examination hall. So let's begin with the introduction of language. So as I have asked you, what is the primary function of language? What is the basic purpose of language? My dear viewers and students, so the simple answer is that is communication. And as far as communication is concerned, we have two different types of communication. We have verbal communication and we have non-verbal communication.
verbal communication is any communication where we need language. वर्बल कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन है जहाँ पर हमें ज़बान की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर हमें लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर लैंग्वेज एक पिवटल मीडियम होता है. और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ दैट कम्युनिकेशन जहाँ पर हमें लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल फिज़िकल जेस्चर्स, व्हेन यू आर सैड यू मे बी लाइक दिस, दैट कैन बी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. But any communication, though it is in written form, audio or video, or directly talking with one another, that comes under the category of verbal communication. So, as far as English language is concerned, or simply अगर हम कहें तो किसी भी चीज़ को समझने के लिए, किसी भी आइडिया को समझने के लिए या किसी भी स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें उस चीज़ की बेसिस को समझना ज़रूरी होता है. तो शायद हमारे यहाँ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में स्पेशली जो जब तक हम कॉलेज लेवल तक पहुँचते हैं या यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुँचते हैं तो हम अपने साथ बहुत सारे लूप होल्स कैरी करते हैं. शायद इसकी वजह ये है कि सिस्टमैटिकली हम ग्रामर को इतना सीरियस नहीं लेते जितना हमें लेना चाहिए. जनरली जब हम ग्रामर सुनते हैं तो हमारे जहनों में हमारे यहाँ यही आइडिया आता है शायद, इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग or for talking in any language. So, but it is not so. We should take grammar as the actual component of language. हमें ग्रामर को बहुत सीरियसली लेना चाहिए एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड इट सिस्टमैटिकली. हमें सिस्टमैटिकली इसको समझना चाहिए और सिस्टमैटिकली इसको कंप्रीहेंड करना चाहिए. When we have system of structures, when we analyze the system of structures in a language, we call that morphology. When we analyze the system of meanings, we call that semantics. And when we analyze the system of ordering of the words or phrases or clauses, then we can call that syntax of a language. We have to understand some basic things regarding language. Language को लेके हमें ये ज़रूरी जानना है कि कोई भी लैंग्वेज हो, दुनिया की कोई भी ज़बान हो, इसको समझने के लिए, इसको कंप्रीहेंड करने के लिए, इस पे ग्रास्प होल्ड करने के लिए हमें क्या चाहिए? व्हाट वी नीड टू डू, हमें क्या चाहिए? जनरली जो आपकी टेक्स्ट बुक्स होती है या जो बुक स्पेशली जो एलिमेंट्री लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे, सीनियर सेकेंडरी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे जो आपकी टेक्स्ट बुक डिज़ाइन की गई होती है, तो they are meant to cater those things which are necessary, which are fundamental to understand language, to comprehend language. And what are those skills? The first and basic skill is listening. तो dear viewers, कोई भी लैंग्वेज हो, अगर आप ध्यान दें, अगर हम सब ध्यान दें, if we ponder over the fact that in learning processes, जब हम since we are infants, जब से हम जो infants होते हैं तब से हम पहले कैसे लैंग्वेज सीखते हैं? तो फर्स्ट हमारे अंदर जो डेवलप होती है that is listening skills. Especially this is true, utterly true for our mother tongue. तो जो किसी भी की कोई भी जो मदर टंग होती है तो वो जानता है, हम सब जानते हैं, एक फैक्ट है कि हम पहले अपनी जो मदर टंग है हम इसको अपनी फैमिली से सीखते हैं, फैमिली से लेते हैं. और कैसे? फर्स्ट वी डेवलप्ड our listening skills of that particular language, and after that, after some time, maybe after a year and half a year or after 2 years, जो एक child होता है, एक kid होता है, वो
लिसनिंग स्किल्स के बाद उसमें जो डेवलप होना शुरू हो जाता है, दैट इज स्पीकिंग स्किल. Okay. After that speaking skill, we have to face another phase, that is reading. जनरली हम यही कहते हैं कि हम वो प्रीमियर बुक्स लेते हैं, वो इंट्रोडक्टरी बुक्स लेते हैं, जहाँ पर we teach our kids A for apple, B for boy, और in any language, कोई भी लैंग्वेज हो तो आप अपनी पर्टिकुलर लैंग्वेज को लेकर वो चीज़ें आप फिर पढ़ाते हैं उन बच्चों को. जैसे ही वो बातें करना शुरू करते हैं तो आप उनको ये सिखाते हैं, रीडिंग स्किल. और उसके बाद द फाइनल फेज हमारा होता है राइटिंग स्किल. तो लिसनिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, रीडिंग हो गया और राइटिंग हो गया. तो ये जब चारों स्किल्स अच्छे से एक बंदे में, एक इंसान में डेवलप होते हैं, ओनली आफ्टर दैट यू कैन से दैट ही नोज द लैंग्वेज द वे ही शुड नो इट. फिर आप कह सकते हैं यस ही नोज द लैंग्वेज, वो अपनी ज़बान को अच्छे से जानता है. नॉर्मली ये होता है जो हमारी मदर टंग होती है, लिसनिंग में भी हम माहिर होते हैं, स्पीकिंग में भी माहिर होते हैं. शायद फॉर एग्जांपल आई बिलोंग टू कश्मीर and I know that in reading Kashmiri I am a poor reader, and in writing Kashmiri I am the poorest, I think. So I cannot call myself as a master of Kashmiri language. No, I cannot, I dare not to say that. तो जब तक आप कोई भी लैंग्वेज ले, चाहे आपकी मदर टंग हो या सेकंड लैंग्वेज या थर्ड लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो, जब तक आप में ये स्किल्स चारों की चारों अच्छे से डेवलप ना हो, you cannot call yourself, you cannot say or you cannot claim that you know that language as you should know that. Anyways, so these skills we must understand and we must develop in reading English as a second language or as a third language. So आपका जो टेक्स्ट बुक होता है, कोई भी जो आपकी टेक्स्ट बुक होती है, वो डिज़ाइन होती है to develop, to enhance these skills among the learners. ये उनका मकसद होता है, listening skills, speaking skills, reading skills, writing skills. So thank you for watching. I'm thankful to all the viewers, all the students who have watched this video. Please, if you have any question, if you have any doubt, drop your question in the comment section, and it will be my honor, it will be my pleasure to address your problems, to respond to your questions, and I will try my level best to address all the questions. Anybody who has any question, you are most welcome. So don't forget to subscribe the channel and to like the video. And if you have any confusion, you can ask very frankly, very openly. You are free to ask, and hopefully you will get response as well. Thank you very much.